Good morning to all of the students. Today we will discuss about the second chapter, work and energy. You know work. In day-to-day life you have seen lot of the peoples are doing a work. But how the work is applied, how the work has been done, that we will see in this chapter. And energy you know very well. There are different kind of the energy are there. And how that energy has been converted. And conversion of the energy. So just see, they are telling us in a work first and energy, then mechanical energy, the machines, the means mechanical energy means the machines. With the help of the machines the energy has been done. Then law of conservation of energy means the energy has been converted from one form to the another form. And the free fall. Free fall you have seen lot of the time. Now variation, just see 2.1, observe various activities. First, the girls writing a book, writing in the book. The boy, just look it, standing, and the girls taking a remote and doing with operating the TV, owning the TV and changing the channel. And the last one you have seen, the person carry a bags on the shoulders. So in which of the pictures above has the work done? Means how you can say the work has been done. In the case of the girls you will see first one, the girls writing a book, writing in the book. Then the last one you will observe the person carrying the shoulders. Now in the case of the girls, third one you will see the operating the remote. Here also the work has been done but in a different forms. And the fourth one, second one, you will see the boys standing but not doing any kind of the things, standing in the position, and then down you will observe certain kind of the things are there. From scientific point of view, when do we say no work has been done? How you can say no work has done? In the case of the boys you will see there is no work. Then in the case of the second, third, you will observe there is also a no work has been done, because the girls in the holding a remote only. But once he will change the channel, then you will observe the work has been done, because with the help of the fingers certain kind of the energy are there. Now generally you know in day-to-day life mental or physical activity has been done, referred we are telling as in a work. Mentally or physical activity, the mental work and physical activity are there, so that we are telling as in a work. Now mentally in day-to-day life you will observe when you are doing when you are coming in the schools and doing certain kind of the things, writing, and you are understanding certain kind of the things. On that time you will observe when you are coming to the home, you will observe you are feeling certainly tired. That is actually a mentally work. But physical activity, the certain in day-to-day life the person are carrying the different kind of the things in the hands and moving here and there. So when you are walking or running, the energy we can say the energy in our body is used to necessary do a work. So when you are walking is there, when you are running is there, when you are moving from one place to another place, so you require a certain kind of the energy, and that energy is coming from the work only. Now we say that a girl who is studying, that I already told you, the girl that is studying, that is a certain kind of a physically, mentally work is there. So that is mental work. So now in physics we will see how the work has been done. So work is said to be done when a force applied on an object causes displacement. When any kind of the object are there, when you apply a force, so that from that we can say the object that move from the one place to the another place on applying the force, then we are telling as in a work. जब बोलते ना कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, वो भी कब, जब तुम लोग फोर्स अप्लाई करोगे, then we are telling as in a work. Already we have discussed about the force. तो वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, वो कब, जब तुम लोग फोर्स अप्लाई करोगे. व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स, एंड हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग, दैट डिपेंड ऑन इट. तो वी विल डिफरेंट सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स. You have seen already in day-to-day life what are the different type of force. So now just look the 2.2 displacement of an object A, B, C. Observe and in 19 page number I am telling about 2.2a. First the girls on the bench, then the second the another girls that string with the toy, and the third one the two cars. The one car that is moving and the another car on the back with the string also, that moving from one place to another place, the other cars. Now in the case of the in the Meenakshi,
he has taken a wooden block and moving that wooden block from point A to point B. In this case, you will observe certain kind of the energy are there. That energy coming from the muscular, that we are telling as a muscular energy. But from that block, wooden block, from place move from A to B, that he is moving. So for that also it required a force. तो देख रहे हो मीनाक्षी के टाइम पे जैसे कि 2.2 ऑब्जर्व एंड डिस्कस वन वी आर टेलिंग दैट ए बी सी. तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट ए, दैट इज मीनाक्षी. उसके हाथ में वुडन ब्लॉक है एंड दैट वुडन ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एक बोलते ना एक हैंड से दूसरे हैंड तक जा रहा है, फ्रॉम वन हैंड टू दी अनदर हैंड. दैट ही इज यूजिंग सर्टन काइंड ऑफ द फोर्स. तो हियर ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड. Once the energy applied, so that on that time we are telling as in what work has been done. Now in the case of the B figure, you just see, you must have seen the event that the displays B and C. In the case of the B and C event, just look. First, the small child is pulling the toy with the help of the string. Here the direction of the force is different. In this case, यहाँ पे direction of force क्या है? Different है. First, the toy is in the displacement. The toy is displacing the another girl. We can say the B girl, B part of the toys. Similarly, the large vehicle you will observe that is displacing the small vehicle. ये day to day life में तुम लोग observe करते हो C वाला figures. When certain kind of the car has been stopped, the another car is there and they are taking an angle and putting to the another, joining to the other angle, joining to the other cars, and they are moving to, they are displacing it. तो ये इन बोथ द केसेस यू विल ऑब्जर्व फोर्स हैज बीन अप्लाइड. बट ये बी और सी वाले में यू विल ऑब्जर्व इन द बी एंड सी द फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. हाँ, हियर बी एंड सी इन द फोर्स, इन दिस केस द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. हियर व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार्ट. यहाँ पे जो बोलते हैं ना चाइल्ड जो टॉय कार्ट को पुल कर रही है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जो कार्ड वो पुल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. हियर इट इज इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, नॉट इन द वर्टिकल सरफेस. तो in this case you will observe the amount of the work has been done. क्यों amount of the work has been done? Because why the amount of the work has been done? You will observe with the help of the string the small toy cart is moving from one place to the another place. So here in the case of the force acting in the direction of the displacement. Force acting in the direction of the displacement means the girls that is pulling with the help of the string that car. वो कार क्या हो रही है, जो स्मॉल टॉय कार है वो मूव हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द वर्क हैज बीन डन दैट वी विल सी. फर्स्ट यू नो द वर्क फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क फॉर्म फाइंड आउट करना तो कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेसमेंट. तो यह वर्क इज व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ हियर यू विल ऑब्जर्व द F is applied the force to the F1. Just take an example of the what two cars just take, or the girl and the small toy car. That just you will observe the first force is applied by the small girl, and where he is applying on the small toy car. जो गर्ल्स है ना वो कहाँ पे अप्लाई फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रही है, जो टॉय कार्ट पे अप्लाई कर रही है वो F1 हुआ. और जो गर्ल्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे कौन कर रहा है? हाँ, you are the force applied by the girls, that is F, and that force is going to the toy car, that is F1. तो in the direction of the displacement, तो you will observe S we are telling is a symbolic form of the displacement. सिंबॉलिक फॉर्म डिस्प्लेसमेंट का S यूज़ करते हैं, वर्क डन का W यूज़ करते हैं, फोर्स का F यूज़ करते हैं. तो ये W इक्वल टू वॉट F1 इंटू S. फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला इज वॉट W इक्वल टू F इंटू S. बट नाउ द फोर्स इज चेंजिंग इनटू द F1. जो टॉय कार्ट मूव हो रही है, द कार इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. तो हियर द फोर्स हैज बीन अप्लाइड, तो दैट्स F फोर्स. द फोर्स F इज वॉट नाउ इट इज F1. तो दे रिटर्न इन अ सिंबॉलिक फॉर्म W equal to F1S. You will observe the equation number 1. Now F is the direction in the string. जो फोर्स कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, पूरा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है. तो देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ द एंगल्स. हाँ, एक सर्टन काइंड ऑफ द एंगल्स होता है इसमें, या तो एक्यूट एंगल होता है, या तो ऑब्टूज एंगल होता है, या तो राइट एंगल होता है. When we are telling about the angle, तो there are three kind of the angles are there. You know very well. Right angle, acute angle, and the obtuse angle. In the case of the girls, you will see that pulling the toy cart. You will carefully observe that is like an above part or down part. It is acute or obtuse. Just carefully look it there. Now you will observe theta be the angle in the string
जैसे मैंने बोला एक तरह का एंगल हो रहा है एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो जो एंगल बन रहा है जो स्ट्रिंग के थ्रू बन रहा है, जो टॉय काट है ना, जो स्ट्रिंग अटैच है और होल्ड किसने किया है, गर्ल्स ने अटैच किया है, तो एक तरह का टीटा हो रहा है, दैट वी आर टेलिंग एज एन एंगल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. नाउ F1 दे आर टेलिंग, हाँ दिस द एंगल दैट इज स्ट्रेचिंग, बोलते हैं जो कार मूव हो रही है जो स्ट्रिंग के साथ में जो गर्ल्स मूव कर रही है वो F1 जो एंगल से के थ्रू हो रहा है फ्रॉम द फोर्स F इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. नाउ हियर cos थीटा इज देयर, यू विल लर्न इन द ट्रिग्नोमेट्री दिस ईयर इन द अलजेब्रा, ये साल तुम लोग पढ़ोगे अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में, इट विल बी देयर समवेयर cos थीटा दैट इज बेस इनटू हाइपोटेन्यूस, और वी आर टेलिंग एडजेसेंट इनटू hypotenuse, formula is there. So now the base is the horizontal one, base is the horizontal direction here, and the hypotenuse you know the slanting position. Slanting position कहाँ पे आ रही है, जो डायरेक्टली गर्ल्स अटैच हो रही है स्ट्रिंग के साथ में, और जो डाउनवर्ड का बोलते हैं जो स्ट्रिंग डायरेक्टली टायर के साथ में या उसके एडजेसेंट पार्ट में अटैच्ड है, टायर के साथ में नहीं मगर उसके रॉड के साथ में अटैच्ड है वहाँ पे, और जो स्लैंटिंग बोलते हैं ना जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो तुम्हारा बेस रहेगा. तो ये द बेस इज F1 एंड हाइपोटेन्यूस इज F. तो cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस इज F1 एंड हाइपोटेन्यूस इज F. यू विल सी फोर्स एंड फॉर यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2.3 फिगर, जस्ट लुक इट देयर. तो दे मेक अ rectangular type box that is like an theta as an angle of F1 and F is the slanting that is hypotenuse type. So here F1 is what, F cos theta. So now work done by the F1, we will see about the F1 work done is how much. We know the formula is what, F into, because we can force into displacement. So now but work F cos theta is there, so this Fs cos theta we will write here first. जो F1 था मेरा क्या हो गया इधर फॉर्मूले में, मेरा क्या है W इक्वल टू F1S, जो इक्वेशन नंबर 1 देखो ऊपर दिया है उसने, W इक्वल टू F1S. तो इन द प्लेस ऑफ F1 आई पुट इट F1 F cos theta S. तो नाउ W इक्वल टू व्हाट, Fs cos theta हियर, हाँ W इक्वल टू Fs cos theta. नाउ वी हैव टू एंटर द कंक्लूजन इन द टेबल. फर्स्ट द एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. He taken a 3 angles, 0 degree, 190 degree and the 180 degree. In the case of cos 0, that is 1, cos 90 is 0 and cos 180 is minus 1. So when you will put the value in the place of the W equal to Fs cos theta, first in the case of the cos theta 1, so you will observe only W equal to Fs. Just see the table they will given, theta, cos theta, W equal to Fs cos theta and the conclusion. You have to write it. Conclusion you have to write it. It can be acute angle, it can be obtuse angle, or it can be right angle.